वर्ड यूज कर रहे हो। तो स्टमक की वॉल में कोई करोजन होता है क्या? इरोजन होता है। तो लैंग्वेज शुड बी करेक्ट। आई डोंट नो फ्रॉम वेयर यू हैव टेकन दैट आंसर। उसमें सब बच्चों ने करोजन इरोजन करोजन इरोजन। इरोजन तो अपन सॉइल के लिए बोलते हैं। द सॉइल गेट्स इरोडेड, हाउ द स्टमक विल गेट इरोडेड? ओके, सो यू हैव टू यूज द राइट वर्ड। डैमेज लिखोगे तो भी सही चलेगा। Is it clear? It will harm the Yes, walls of ma'am. the stomach, or it will damage the walls of the Yes, ma'am. stomach. That way you should write down. Okay, corrosion अपन chemistry में use करते हैं. Okay, where the chemical reaction takes place. Okay, so there we will use corrosion. So each subject has a language, na particular language, particular words we have to use it. So that also you have to take it in account whenever you are copying from somewhere. थोड़ा दिमाग लगा देते तो वो सही कर देते, पर बिल्कुल सेम कॉपी कर दिया है। And I got same answer. Everyone getting the same answer. Last में वो आंसर वर्ड आ रहा है, बाकी पूरा कॉपी किया हुआ है सबका। ठीक है, तब थोड़ा सा समझ लो, इतना ज्यादा वर्ड्स में भी नहीं लिखने की जरूरत थी। So two things I wanted in your answer. One was that is the HCl is there and the proteolytic enzyme pepsin is there. And mucus is forming a coating on the epithelium of the stomach wall. Okay, and it is protecting the stomach wall from the HCl, that is the damage caused by the HCl, and the digestion, that is preventing the digestion done by the proteolytic enzymes. Is it clear? The walls, the Yes, ma'am. tissues will not get digested by the proteolytic enzymes. So this were only two things, but two numbers. All have understood? And if Yes, something ma'am. missing, किसी किसी ने सिर्फ HCl के बारे में लिखा है तो फिर हमने नंबर काट लिया। जिसने HCl पेप्सिन दोनों लिखा तो आई हैव गिवन फुल 2 marks. Is it clear to everyone? Yes Yes, or Yes, ma'am. ma'am. no? Okay. So everyone will do correctly next time. Yes, Yes, ma'am. yes, हाँ, ma'am. प्रॉपरली इतना अपन पढ़ते हैं तो उसको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। ओके, क्लास में जब आंसर्स लिखते हो आप टेस्ट के समय, तो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई हैव स्टडीड इन द क्लास। ओके, सो ट्राई टू टेक अप ऑल दोज थिंग्स इन योर आंसर। बस ऊपर ऊपर का आंसर नहीं चाहिए। ओके, नाउ टेल मी द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? Leaves of a Vaseline healthy वाला। potted plant. हाँ, Leaves of a healthy potted plant were coated with Vaseline. Will the plant remain healthy for हाँ, longer time? Give reason. ओके। So that was very simple question. फिर भी उसमें आधा आधा पार्ट सर ने खोल दिया। I got some students have written very nicely three things. The तीन Hmm. processes affect होंगे. And what are those three processes? Number one, respiration. Respiration. Because O2 will not be. Photosynthesis and transportation. Okay. So those who have written all three, so I have given full marks. Because respiration, photosynthesis, transpiration. Three things will get affected if the stomata get blocked. Vaseline is blocking the stomata, that they all have written. Okay, and then if but ये भी पहले ही लिख देना है that it will not remain healthy for the long time. It will die after some time. Why? So number one, O2 will not be taken. O2 CO2 exchange will not occur. O2 which will be needed for respiration. So respiration will not occur. No release of energy. Then CO2 will not be taken. So no photosynthesis, no synthesis of the food. Okay, and third thing, transpiration will not occur, which develops the suction pull for the transport of the substances in the plant body. So this way, three things should come up in your answer. How many have noted? I am noting in the lecture notebook just now. Put today's date and whatever we are discussing, you should note down. Followed all of you all? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes. Okay. Now next question. What was remaining? So Ma'am, label diagram. along with that only I gave the diagram. So diagram I got many different diagrams and they are all correct. लेकिन जिसने सिस्टम बनाया है उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे।
Okay, but other children have drawn showing the diaphragm going up, diaphragm going down, then the ribs moving up, outward. All those diagrams which you all have drawn, you have got full marks, 1 mark, because the diagram was of 1 mark, and 2 mark was for the first part of the question. Is it clear? So that was 1 mark diagram it was. So you all have got full 1 mark. And those who have drawn but diagrams, that respiratory system, you have drawn very good diagrams. But क्या करें उसमें marks तो दे नहीं सकते थे. But very good diagrams I have got it. Okay, so try to. Now I will send it one मैम more. रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला कौन सा? अरे जो बुक में बना हुआ है ना रेस्पिरेटरी सिस्टम. मैम उसमें वही बनाना था ना, आउटवर्ड रिब्स और वो हाँ वो डाउन रिब्स. हाँ, yours is correct. You have got 1 mark full. यस मैम. हाँ ओके. तो मैनी स्टूडेंट्स हैव गॉट फुल मार्क्स क्योंकि इसके लिए कई तरह के डायग्राम्स अपन को मिलते हैं. और दैट बट रिमेंबर डायग्राम में ये दिखना चाहिए अपन को कि डायफ्राम इज गोइंग डाउन, गोइंग अप, देन इंटरकोस्टल मसल्स आर देयर, तो वो रिब्स का मूवमेंट आउटवर्ड हो रहा है, इनवर्ड हो रहा है. So that should be visible in your figure. So you will get marks. Okay, diagram can be any type. Okay, understood all of you all? यस Suppose मैम. Yes, ma'am. mechanism to discuss in the class. तो उस तरह से आप बना सकते थे कोई भी डायग्राम. Okay, so now I'll send one more diagram. So those who have not drawn, they can draw it. Okay, or you can take up any diagram wherever you are getting showing the diaphragm movement and the ribs movement. Okay, so any other doubt related to your paper? मैम दैट ग्रेप्स वन. अच्छा grapes. That was the chemistry question. You know, that was chemistry. मैम हम लोगों ने बायो में कर दिया है. हाँ कोई बात नहीं, हमने उसमें नंबर दिया है. एंड दैट वाज ऑफ 3 marks ना. Yes, ma'am. इट वाज ऑफ 3 marks. तो इस तरह से वो 10 marks का बायो हो गया था जिनने उसमें किया है. तो आई हैव डन द इवैल्यूएशन. ग्रिप्स वाले में एक बार वो दो तीन चीजें पूछी गई थी. वन वाज व्हिच टाइप ऑफ द चेंज, अनदर वन वाज दैट व्हाई इट डज नॉट गेट स्पॉइल्ड, फर्मेंटेशन क्यों नहीं होता है. So, two reasons for why fermentation does not take place. Now, if you relate it to the biology part, that way also you understand fermentation occurs in the absence of oxygen. Okay, so that was the integrated question you can say. Physics and that is chemistry, biology both. अगर आपको बायो का भी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फर्मेंटेशन तभी होगा जब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. Okay, and oxygen supply will continue till the grapes are where? On the plant. ऑन द प्लांट. On the plant. Attached to the stem. It is attached to the plant, it is live, respiration will continue, and aerobic conditions will be maintained. And apart from that, the other one you all have written all that immune system will work. Okay, so that is also there. When the cells are alive, so they are working, they are fighting with any pathogens. Well, so two things will be there. Any microbe will not enter, and if microbe is entering, the anaerobic conditions will not be provided. So that is why there will be no fermentation. Once it is plugged, when the grape is plugged, so then there is no respiration. Anaerobic conditions will be created, and there will be no immune system also. So the microbial growth, that is which microbe will grow? Yeast. Okay, so the yeast will start growing in that, and that sugar will be consumed by the yeast and will be converted into alcohol. That will be the fermentation. Okay, so what type of change? अब change केमिकल. Chemical change. हाँ चेंज पूछा है तो इसलिए आपको उधर पर एक बहुत अच्छे से एक सेंटेंस लिखना चाहिए था. दैट द ग्रेप्स कंटेन द शुगर, लेकिन वो हमको किसी के आंसर में नहीं मिला है. दैट ग्रेप्स मैम न्यू कंपाउंड फॉर्म्ड अल्कोहल. हाँ अल्कोहल यू हैव रिटन यस दैट. मैम, ये तो लिखा है. Okay. So now that sugar which is present, it will be acted upon, or it will be consumed by the yeast, and yeast will convert it into the alcohol. That is the ethyl alcohol. Okay. So that way few things आप इतना पढ़ते हो लेकिन लिखते समय उतना पूरा लिखते नहीं हो. That is the problem, children.
ओके, एवरीथिंग द टीचर्स आर डिस्कसिंग, इतना सारा पढ़ोगे लेकिन लिखते समय थोड़ा ध्यान रखो वो सारी चीजें। ओके, हाँ, स्नेहा इज सेइंग, हाँ, ओके। तो एनी अदर डाउट? हाँ, तो कार्तिक इज आस्किंग कि कब तक फर्मेंट होंगे, इट विल टेक टाइम। ओके कार्तिक, इट टेक्स टाइम, इट्स नॉट अ वेरी फास्ट प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। ओके, एक आपने ग्रेप लिया है तो वो जल्दी फर्मेंट हो जाएगा, बट इफ यू आर टेकिंग लॉट्स ऑफ ग्रेप्स एंड देन यू वांट दैट दे all should ferment and then ethanol should be generated, so then it will take time, the process will take time। मैम किसी के And पूरे साइंस में फुल है? फुल किसी के नहीं आए। Okay, someone is asking, Karthik is asking why is it better? Okay, that I'll discuss later. ठीक है, अल्कोहल का केमिकल वो नेचर बदलता जाता है, तो ओल्ड वन इज बेटर। ओके, इट विल बी मोर स्ट्रॉन्गर, यू कैन से। ओके, मोर स्ट्रॉन्गर। So understood all of y'all? Any doubt Yes. related to the paper, or should I start with the uh, heart structure? Ma'am, no doubt. No No doubt. doubt. Okay. Now I'm presenting my screen, children. You can go back to those pages in the notebook and try to revise. Okay, एक बार देखो जल्दी से कि how many chambers are there, what is the location of the heart, and the heart is made up of which muscle, and how is the heart protected. I want the answer to all these questions now. We have already discussed all this. मैम क्या क्या बताना है? Number one, what is the location of the heart? So who will give me the answer? What is the location of the heart? Tia. Tia is telling. चलिए, okay, say. Ma'am, in the thoracic cavity, between the two हाँ, lungs, above the yes, diaphragm, slightly yes, towards left. हाँ, very good. Okay, so that is the location of the heart. Everyone has understood that exact location. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. My second question is that which muscles make up the heart? Cardiac muscles. Cardiac Cardiac. muscle. Cardiac muscle. Right. Okay. And then how is the heart protected in that region Pericardial where fluid, by pericardial fluid. Pericardium, the membrane, and filled with fluid called yes, yes. pericardial fluid. Pericardial Pericardial. fluid. First is the covering is the pericardium, and the fluid is the pericardial fluid which protects it Mechanical from shocks. Shocks. mechanical shock. ठीक है, इतना हो गया था अपना। ठीक है, then we did how many chambers are there? Four. 4 chambers. The two atrium Okay. and two ventricles. Two atria or the auricles, and the lower ones are the ventricles. ठीक है, so Ventricles. all have understood this much? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now I'll take up that ये 4 chambers बने कैसे। You can see here in the picture, children, that where is your heart located. So heart is located where, and size also we discussed, between the lungs to the left of the sternum in the chest cavity. What you call it? Chest cavity, that is above the, thoracic cavity. that is in the thoracic cavity. Okay, now try to see this picture, children. देखिए इस पिक्चर से सारी चीजें आपको थोड़ा सा विजुअलाइजेशन में दिक्कत होगा, तो आई विल बी सेंडिंग वन मोर फिगर, हैंडमेड एक बना के आपको भेज देंगे, एंड देन नेक्स्ट पीरियड आई विल बी is expecting one student to present that diagram and explain. Okay, आज अभी अच्छे से समझ लो. Now 4 chambers are there. So how that whole heart is divided into 4 chambers.
So there is a partition. Okay, the first partition, remember, which is dividing the heart into upper chambers and the lower chambers. Okay, now upper chambers you call it as the auricles or the atria, and lower chambers you are calling it as the ventricles. Okay, now auricles also we call it as left auricle and right auricle. Same way, the ventricles we call it as left ventricle and the right ventricle. Can you see here in the picture, children? The screen is visible to everyone. Yes, ma'am. Okay, the upper two chambers. Now, how these upper two chambers are separated? There will be one wall. Okay, that wall we call it, or the cross wall we call it as septum. What is it called? Septum. 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 हाँ, दो ऑरिकल्स के बीच के सेप्टम को नाम ना बस थोड़ा सा उसका मीनिंग समझोगे तो अच्छे से याद रख जाएगा. इंटर ऑरिकुलर सेप्टम. So the two auricles, so you write it. The two auricles are separated by interauricular septum. The two auricles are separated by interauricular septum. Do you want the spelling, or it's you'll be able to write down? Ma'am, please tell. Also, na, I'm just okay. The two auricles are separated by inter auricular septum. Okay, interauricular septum. Now, this is the cross wall present between two auricles. Now, the same way you find the lower part of the heart is divided into two ventricles. अब वो एक पूरा चेम्बर था, वो दो कैसे हो गए? तो दोनों के पार्टीशन के लिए फिर से एक क्रॉस वॉल है, and that we call it as interventricular septum. Ma'am, what is this? Interventricular septum. It is the cross wall present between the two ventricles. Or you can write down the two ventricles are separated by the interventricular septum. Okay, the two auricles are separated by interauricular septum and two ventricles are separated by interventricular septum. You can see here, children, in your diagram also, it is written as atrial septum and here it is written as ventricular septum. तो उसी को आप क्या लिख लेंगे? इंटर. इंटर मतलब बीच में, दो ऑरिकल्स के बीच में, तो द वर्ड और द नेम बिकम्स इंटर ऑरिकुलर सेप्टम. और वेंट्रिकल्स के बीच का तो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम. इज दिस मच क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So you find that auricles and ventricles are also separated. दोनों मिक्स तो नहीं होते, उनके बीच में भी वॉल है. So that wall we call it as auriculoventricular septum. So you will write down the auricles and ventricles are separated by. Write it down. The auricles and ventricles are separated by auriculoventricular septum. Auriculoventricular septum. So I'm repeating now. The heart is having 4 chambers. The upper 2 chambers, you have to learn it here only. I'll tell anyone to repeat. So try to learn it here itself. The heart is consisting of 4 chambers. The upper 2 chambers are the auricles. The lower 2 chambers are the ventricles. The auricles, the 2 auricles, they are called as left auricle and the right auricle.
These two auricles are separated by the interauricular septum, and the lower two chambers called as ventricles, which are the left ventricle and the right ventricle, they are separated by interventricular septum. The auricles and ventricles are separated by again a cross wall, which is known as auriculoventricular septum. We will call it the left auriculoventricular septum and right auriculoventricular septum. The left auriculoventricular septum is separating the right auricle and the right ventricle, and the left auriculoventricular septum is separating the right auricle and the right ventricle. Clear this much to everyone? Yes or no? मैम लास्ट वाला जो आपने बोला वो एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए. Okay. The auricles and ventricles are separated by the auriculoventricular septum. ओके नाउ अब 4 चेम्बर से मतलब एक लेफ्ट साइड हो गया, एक अपना राइट साइड हो गया. तो लेफ्ट साइड के चेम्बर्स के बीच में जो क्रॉस वॉल है उसका कॉमन नेम तो ऑरिकुलोवेंट्रिकुलर सेप्टम हो गया. तो लेफ्ट वाले को अपन लेफ्ट ऑरिकुलोवेंट्रिकुलर सेप्टम बोलेंगे और राइट वाले को राइट ऑरिकुलोवेंट्रिकुलर सेप्टम. Now try to understand the septum cross wall is having an opening. Opening we call it as aperture. Okay, auriculoventricular septum, there only write down, has an aperture. Has an aperture. Aperture means what? Curve. Opening. What is that? The opening. Okay, there is a small hole you can see in that septum, in that cross wall, which is connecting the auricles and the ventricles. Okay, that aperture connects the auricles and the ventricles. Yes, Sneha. Ma'am, in the diagram where it is left auricle septum and auriculoventricle septum. Now try to see here. The color you have to understand, children. The color tells us that which one is left and which one is the right one. Okay, the left one is receiving and supplying, the left part of the heart is receiving and supplying the oxygenated blood. So it is always represented by the red color. Clear, Sneha? Okay, ma'am. Okay, so it will always be represented by the red color. And the right part of the heart, that is your right auricle and right ventricle, it is receiving and supplying the deoxygenated blood. So we always denote it by the blue color. इस फिगर में भी देखो ये ब्लू जितना पार्ट है ये पूरा अपना राइट ऑरिकल है, ऊपर वाला, नीचे वाला राइट वेंट्रिकल है. ओके, और राइट वेंट्रिकल से निकलने वाला जो ब्लड वेसल है दैट इज द पल्मोनरी वेंट्रिकल से निकलेगा तो पल्मोनरी आर्टरी. ओके, और ऑरिकल लेफ्ट और राइट ऑरिकल में आने वाला जो है ब्लड वेसल जो ब्लड लेके आएगा वो है पल्मोनरी vein. Always remember the veins are bringing the blood to the heart and arteries are taking the blood from the heart. Is it clear this much to everyone? Yes. Yes, ma'am. It's a complicated structure. Many terms are there which you have to remember. लेकिन एक बार पूरा स्ट्रक्चर समझ लिया तो वो तुरंत याद हो जाएगा. अभी जितना बताया, did you learn it or not? Learned. मैम Yes. तो लंग से पल्मोनरी वेन से जो ब्लड आएगा फिर वो कहाँ जाएगा? So that will come into the auricle. It will come into the right auricle. ठीक है? ओके, फिर नहीं, लंग्स से जो आएगा वो तो अच्छा वाला होगा, ऑक्सीजनेटेड होगा, तो वो लेफ्ट ऑरिकल में आएगा.
ओके, रिमेम्बर चिल्ड्रन, लंग्स में जो ब्लड जा रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। ओके, और जो वहां से आ रहा है वो ऑक्सीजनेटेड आ रहा है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सारे बॉडी में सप्लाई करना है, तो इट विल कम इनटू द लेफ्ट ऑरिकल, and from left auricle it will go into the left ventricle. So remember children, auricles are receiving the blood. Auricles are receiving the blood. and ventricles are supplying the blood. Understood all of you all? Auricles are doing what work? Receiving The blood. Receiving the blood. Ventricles are doing what work? Supplying blood. Supplying blood. And I said left will be receiving which blood? Oxygenated. Oxygenated. Right part will receive Deoxygenated. Deoxygenated blood. मतलब राइट ऑरिकल में कैसा ब्लड आने वाला है? कार्बन डाइऑक्साइड वाला. हाँ, Deoxygenated. वाला, मतलब डीऑक्सीजनेटेड वाला। ठीक है, तो वो कहाँ से आएगा? बॉडी. हाँ, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ओके, फ्रॉम डिफरेंट बॉडी। यस यस मैम, पल्मोनरी वेन से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया वो लेफ्ट आर्टरियम में गया। यस, फिर उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में गया। लेफ्ट ऑरिकल से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलेगा, वो एओर्टा में जाएगा, and aorta will take it to all the parts of the body. So see in this figure children, ये इतना बड़ा सा एक ब्लड वेसल दिख रहा है which is labeled as aorta. Yes. So this aorta, it is the biggest artery. Aorta is the biggest artery and that will have many branches, और further वो branching होके it will take the blood, means the oxygenated blood, to all the parts of the body. Okay, and another one is the pulmonary artery. तो pulmonary artery अब इस फिगर में देखो, क्योंकि ये अलग फिगर बना हुआ है, इसमें अपन को लगता ऊपर से ही दिख रहा है निकलता हुआ, but this aorta is coming out of the ventricle. Aorta comes out from which ventricle? Left. Left ventricle. Okay, and the pulmonary artery will arise from right ventricle. Okay, and that will take the blood to the pulmonary word. Remember children, it is related to lungs. तो artery मतलब लेके जाने वाला, तो pulmonary artery will take the blood to the lungs. And from which ventricle? Right. Ventricle. So which type of the blood it will be? Deoxygenated. So I hope now everyone, एक चीज बस बच रहा है जो हम अपर्चर बता रहे थे, and one more thing, that which blood vessels will bring the blood into the right auricle. You said that superior and inferior vena cava. Very good. Superior vena cava and inferior vena cava. So superior vena cava will bring the blood from upper part of the body. Upper बोले तो मतलब हार्ट के ऊपर. ओके, हार्ट के ऊपर के पार्ट से जो हार्ट तक लाएंगे वो सुपीरियर वेना कावा. ओके, तो बिग वेन्स ओनली नोन एज द वेना कावा. Okay, and inferior vena cava, they will bring the blood from lower part of the body. Is it clear? From the lower part of the body. Means हार्ट के नीचे वाले पार्ट, मतलब अपने लेग्स वगैरह रीजन से. ओके, और अपने हैंड्स से, हेड से सुपीरियर वेना कावा will bring. And it will drain it into the right Ventricle. atrium, auricle. वो तो नहीं, Atrium. it will give it into, or it will drain it into the right auricle. The right auricle say it will be passing into the right ventricle through the aperture, through the Aperture. okay, which is guarded by the valves. Okay, the aperture does not remain open all the time. It is having a valve. So the aperture, that is the left aperture and right aperture you call it. क्योंकि left auriculoventricular septum में भी एक aperture है.
which will be connecting the left auricles and the ventricle. And the right aperture, that is the right aperture means the aperture present in the right auriculoventricular septum will be connecting the right auricle and the right ventricle. Okay, now remember that the left aperture is guarded by Mitral. is guarded by bicuspid valve. Bicuspid valve. So bicuspid here meaning children having two flaps. Okay, having two flaps and the flaps sort of, and then the other one, that is the right aperture, is guarded by the tricuspid valve. Right aperture is having Tricuspid. uh, Tricuspid valve. is guarded by, same you can write down, is guarded by Tricuspid valve. tricuspid valve. मैम बाइकस्पिड को माइट्रल बोलते हैं ना? Mitral valve, yeah. So the bicuspid valve is also known as mitral valve. Bicuspid को ब्रैकेट में आप लिख लीजिए, that is the mitral valve. So is it clear children this much? मैम कोई स्पेसिफिक रीजन होता है क्या कि इनके में दो फ्लक्स होंगे? Now tell me, किसमें प्रेशर ज्यादा होगा? मैम ये फ्लक्स वाला क्या है? Which one? फ्लैप मैम Flap. वही Flap का तो ये सिर्फ you find that अब I'll have to be in front of you, then only I can tell you the presentation है. मैम But in the last class when you showed an animation, it showed clearly that how it is I show you the animated one video. I'll show you ना, you'll understand. Okay, so how three flaps are there. तो ऊपर से प्रेशर पड़ेगा तो वो फ्लैप दूर दूर हो जाएंगे, blood will come into the ventricles. Okay, and same way तो यहाँ पर तीन different पार्ट में वो valve divided है और इस तरफ से दो पार्ट में divide हो रहा है. Follow, and then we come to the next thing which I have to tell you. So all have understood this much. The superior vena मैम cava. डायग्राम में राइट अपर्चर और लेफ्ट अपर्चर बता दीजिए एक बार. अच्छा, डायग्राम में ये देखो, इधर ब्लू के पास में ये इस तरह के दो लाइंस दिख रहे हैं. कुड यू सी माय कर्सर? yes यस मैम. Yes, ये ma'am. वाला जो ट्राई, ये अपर्चर है और इस अपर्चर पर जो ब्लू सेक्शन में है, दैट विल बी द ट्राइकस्पिड valve. दिस अपर्चर विल बी गार्डेड बाय ट्राइकस्पिड valve. तो इस मैम तरह यहाँ पे ओपनिंग कहाँ है? ये ओपनिंग छोटा सा खुला हुआ हिस्सा दिखा रहे, दो लाइन हमने दिखा दी बस. यू सी देयर? हाँ. ओके और मैम. इधर पर आप देखो तो इस जगह पर दूसरे रेड पार्ट में देखोगे तो ये न्यूट्रल वाल्व. कुड यू सी देयर? yes ये ma'am. दोनों को मैम इट्स ऑरिटिक valve, what is it? aortic valve. Aortic हाँ, valve. sorry. It is the aortic valve is present in the aorta. Okay, aortic valves, these now what happens, जो blood ventricle से बाहर जाएगा तो left ventricle तो it is supplying it into the aorta, and the right ventricle is supplying the blood or it is pumping the blood into the pulmonary artery. Okay, अब क्या होगा कि जब ventricles relax होते हैं तो there will be the chance that from the pulmonary artery blood will go back into the ventricles, and from the aorta the blood will go back into the left ventricle. उस backflow को रोकने के लिए you find this pulmonary artery and your aorta both have valves, and these valves are known as the semi-lunar valves. What is it called? Semilunar valves. Semi-lunar valves.
Okay, so these semi-lunar valves prevent the backflow of blood into the ventricles. तो उसी में से जो एओटा का वाल्व है उसी को अपन एओटिक वाल्व बोल रहे हैं. Is it clear? Rest all labelings are clear to Ma'am, you. what semilunar valves help? Prevent the backflow of blood into the ventricles. Prevents the backflow of blood into the ventricle. This is very important question, children. Okay, what is the function of the valves? So wherever you are finding the valves, whether the bicuspid, tricuspid, or the semilunar valves, they prevent the backflow of blood. They prevent the backflow of blood. So this way we have completed today the structure of the heart, children. All have understood? मैम बट व्हाट अबाउट इसका नेक्स्ट ये ऐसा क्यों होता है बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड? Again, हाँ. What you are saying? मैम इसका नेक्स्ट क्लास में को वीडियो दिखा दीजिएगा, मतलब कैसे हाँ, अंदर जाता I'll है show खून. you the video. Correct. I'll show you the video. Okay? मैम मैम Because रीजन क्या था उसका कि दो नहीं तो अभी फ्लक्सेस हैं और तीन फ्लक्स? हाँ say. मैम व्हाट वाज द रीजन फॉर हैविंग टू फ्लक्सेस और थ्री फ्लक्सेस? अच्छा. That now I'll be telling you in the next class. Okay? We'll मैम पहले discuss ये तो further. बताइए, ये जो फ्लक्स बोल रही है वो क्या होता है? फ्लैप. हाँ वही फ्लैप. आप पहले वीडियो देखना, पहले फ्लैप समझना, फिर हम आपको उसका बताएंगे. साथ में अपने वॉल की थिकनेस में भी अंतर है. ओके, वो भी क्यों है, दैट ऑल्सो आई डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. ओके ओके, मैम. ओके मैम. अब इतना पूरा सबको याद करके रख लेना है. Okay, Yes, ma'am. each and every student should learn this much the structure of the human heart. Okay, मैम हम लोग and ड्रॉ then करेंगे तो रेड और ब्लू अलग डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? there's no problem. You no need to do the coloring. एक को शेडिंग कर दो, एक को मत शेड करो. That can be also done. ओके Okay, मैम. with the pencil. You know, when you are doing, so you can do the shading of one part, leave it like that, other one. Okay. So I'm stopping the sharing, children. Already it is 20. Okay, so now we will have 2 periods in a week. So we'll be able to do better, isn't it, Ma'am, Nico? हाँ. मैम अच्छा, that timetable you have not got? No, ma'am, we didn't get. Okay, one more additional period. I'll send it. Okay, I'll check it. ओके मैम. One more period is there, and that will be the second period. So it will be continuity will be there. ये लंबा गैप हो जाता है, नहीं तो वीक में एक दिन होने से बहुत लंबा गैप हो जाता है, isn't it? Yes, ma'am. Finally, अब हम मिल दो. Okay, so now you will be meeting 2 times in a week. ओके, लेकिन एक बात Okay. याद रखना है ना, अपन एक पीरियड में पढ़ते हैं ना, आप पूरा बुक में रीडिंग भी करो और साथ में व्हाट वी डू हियर इन द क्लास दैट आल्सो यू रीड इट. ओके, Yes, देन ma'am. ओनली यू बी एबल टू प्रिपेयर इट. मैम क्वेश्चन. हाँ, क्वेश्चन विल बी राइट डाउन डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट. Describe the structure of the human heart with diagram. मैम इन स्ट्रक्चर वी विल राइट ऑल दैट. Whatever we have this means you will start with the number of the chambers. ओके. Okay. No need to explain the location and all, the size and all. You will start from the chambers. That it has how many chambers? फिर पूरा आएगा auricular septum. Ma'am, in it walls also we have to explain. You have to write down about all septum, all valves, all blood vessels coming into the heart and going out of the heart. Okay. मैम ये Ma'am, वॉल्स so वाला समझ everything. नहीं आया अच्छे से. वॉल वाला समझ नहीं आया? बस वो सेमी लूनर वॉल्व आ गया, कहाँ कौन सी है वो नहीं आया. अच्छा, वो लेफ्ट साइड में है. सेमिलूनर वैल्व तो पूरी ब्लड वेसल्स में है ना, जो वेंट्रिकल से बाहर जा रहे हैं. ओके, सेमिलूनर वैल्व्स में
उन ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट है जो हार्ट से ब्लड को लेके जा रहे हैं। और बाकी? और 2 वाल्व वो है, वो तो सेप्टम में प्रेजेंट है।